Hey guys, this is Kashish and I'm India's youngest life and relationship coach. I help people to marry themselves in order to have better life and relationship as well. So today you are here to learn about yourself. Today you are here to love yourself because I am going to give you challenges which will make you fall in love with yourself all over again. But before that, I will request you to hit the bell icon and hit the subscribe button so that every week you will get a new video which will change your life if you know how to put that technique in your life. So let's get started with today's topic, which is loving, self-love. We all have heard about a lot of things like self-love, self-mastery, self-awareness, praising yourself, and you should say no to the stuff which is not serving you anymore. We heard about it. We heard a lot about self-love. But the worst part is that we only heard about it. We never invested our time in that. We never put it that in action, because हम किसी और से प्यार करने जाते हैं तो हमारे पास 100 तरीके हैं उनको प्यार दिखाने के, लेकिन जब हम अपने आप से प्यार करने जाते हैं तो हम 1, 2, 3 तीसरे में अटक के 100 हमारे पास बुराइयां आ जाती हैं हमसे नफरत करने के लिए. Raise your hand if you are the one जो अपने आप से नफरत करते हैं, and raise your hand if you are the one जो अपने आप से नफरत किया करते थे. I will raise my hand in that. So we all hate ourselves in some way or the another. But the worst part is we are doing a lot of damage by hating ourselves. अगर कोई इंसान अपने आप से प्यार नहीं कर सकता तो मैं ये लिख के दावे से कह सकती हूँ कि वो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता. Because जो आपके पास होगा ही नहीं तो आप दोगे क्या? For example, अगर आपके घर में पड़ोसी आपके शक्कर मांगने आते हैं कि शक्कर दे दो, ठीक है, चाय बनानी है, उनको शक्कर मांगने आते हैं, आप शक्कर दे दो. बट आपके पास शक्कर ही नहीं है तो आप क्या दोगे? आप शक्कर तभी दे सकते हो उनको जब आपके पास आपके घर में आपके लिए शक्कर होगे, right? This may sound like, what an example this is, but this is the truth. When you don't love yourself, you cannot love another person and you cannot be loved by another person. It works both ways because it's an energy which we are talking about. Everything is an energy. When you invest in yourself, when you focus on the things you like, you get more opportunities like that. In the same way, when you love yourself, when you praise yourself, you don't need another person to approve you because you approved yourself. So there are a lot of things which can be changed when you start loving yourself. And it's not something like loving yourself, it's a big deal. It takes time. In the same way, it takes time to love another person. But the worst part is if you love another person without loving yourself, you will end up doing breakup or divorce maybe. Or if you are the one who just boy or a girl, work both ways here. कोई भी हो, आप कोई भी आपका रिलेशन हो, अगर आप अपने आप को नहीं प्यार कर सकते तो आप किसी और को भी नहीं कर सकते. Because you don't know your self-worth, you are not self-aware, you don't know how to praise yourself, how to treat yourself, you don't know how to respect yourself. अगर आप ही अपने आप को respect नहीं करेंगे तो दूसरा क्या करेगा? नहीं करेगा. But जब आप अपने आप को respect करेंगे और आप देखेंगे कि कोई और आपको respect नहीं कर रहा है तो you can raise your voice and say, this is not a way to treat me, because you know your worth. So let's start with today's session, today's masterclass, which is all about loving yourself. So I have these challenges for you. These are the challenges for you. One by one, I'm going to take you to the challenges and I will request you to just pay attention to one topic for one day. Like these are the 12 topics. Pay attention for the 12 days. Pick one challenge for yourself and apply it in your life. Write it down. Grab your pen and paper because I am here to teach you. This is not some random motivation stuff about loving yourself, self-love, and all the stupid crap I will say. But this is a particular technique session because I have this mission in my head to just take you to the journey of the techniques to give you what you deserve, which you can apply it in your life, and then your life will be transformed.
So let's get started with it. The number one is self-awareness. Everything starts with self-awareness. Now you might be thinking, what is self-awareness exactly? Maybe you know, this is what I like, this is what I don't like. I like to eat ice cream, I don't like to eat cookie, or I like banana, I don't like apple, or you know, I like this kind of a boy, I don't like this kind of a boy, or maybe I like hot girls, not a salwar suit girls, or maybe I like sari girls, not a mini skirt girls. Whatever your choice is, this is not self-awareness is all about. It's not about judging the other people and saying, oh, this is what I like and this is what I don't like. No, self-awareness starts is who you are and who you want to be. When we work on ourselves, there's nothing which is related to another person out there. It's all you. It's only and only you. So you need to understand that, okay, who I am and who I want to be. What I am doing now and what I want to be. When I started with my journey, there's a big question I asked myself, which was who I am. And it took me months to find the answer that who I really was, because we are living in the world where we are taking other people's stuff that, okay, maybe someone said to you, you are beautiful, so you accept it in your head, oh, I am beautiful, but you don't know that you like yourself or not. You think you are beautiful, but you don't know that your acceptance is there or not, right? Because the other person said you are beautiful, you become beautiful. In the same way, if the other person says you are ugly, you become ugly, because your brain is accepting what other people are saying, because you don't know yourself that who really you are. And that's where the big question mark is. It's gonna take time. It's not just one night job and you just do it and just magical thing happening. No, it's not like that. You have to put the work. You have to uncover, you have to ask yourself empowering questions just like this. Who I am, who I want to be, what I am doing right now, which I like, what I'm doing right now, which I don't like, what outcome I want from my life, why I am here, what is my sole purpose. Am I doing the best I can? Am I the person who is not serving others? Am I a giver or a taker? You have to ask these some really powerful questions to yourself so that you can uncover who you really are. You can say lie to all the planet, to all the other people on the planet, but you cannot say lie to yourself, because when you put it on a paper, who you really are, you uncover some really truths, some serious truths about yourself. Because आपको पता है कि बचपन में आपने कौन सा वो सेल्फिश काम किया है जिसकी वजह से आज भी आपको वो प्राइस पे करना पड़ रहा है. Because you know कि आपने कब किसके साथ कैसा बिहेव किया है और आपने दिखाया ऐसा है कि सामने वाले की गलती है. We are humans. We do mistakes. But it's important to know what we are and what we want to be. When we say lie to ourselves, हम नकाब पहन लेंगे अपने ही सामने, अपनी ही चीजों को छुपाने के लिए, तो हम ग्रो कैसे करेंगे? हम ग्रो नहीं कर पाएंगे ना फिर. So this is a time to put your self-awareness on fire, because this is the first very step for accepting yourself, loving yourself, and on the journey of self-love, right? Okay, the second one is self-acceptance. Now, I have heard a lot of people not accepting themselves because of the body type they have, because of the skin they have. Let me show you something. Please, cameraman, zoom kar dena isko. I have these pimples on my face. If you can see, zoom aa jayega. If you can see, I have these pimples on my face, and honestly, in my childhood, I was not the one who could accept myself with the pimples. So I went to the dermatologist. I did a lot of treatments,
एक टाइम पे तो मेरे को कीले भी थे ब्लैक कलर की मेरे फेस पे, एंड देयर लॉट ऑफ द बॉडी टाइप आई हैव, आई एम फैट, माय यू नो माय आई हैव अ कर्व व्हिच यू नो थोड़ा सराउंडी राउंडी हूँ मैं अब। बचपन में थोड़ी पतली हुआ करती थी, अब थोड़ी मोटी हूँ, खा पी के फास्ट फूड खा खा के ऐसे हो गई हूँ। सो यू नो दिस इज माय बॉडी टाइप नाउ, एंड मे बी द स्किन आई हैव, यू नो माय स्किन इज वेरी ऑयली एंड आई गेट द, कभी भी मेरे को ऑयल हो जाता है, कभी भी बहुत ड्राई हो जाती है, कभी भी स्किन छिलने लग जाती है। आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन। सो व्हाट इट इज, हम अपने बॉडी टाइप की वजह से, हम अपने स्किन कलर की वजह से, व्हाट एवर योर thing is, you know, we all have our own flaws, whether it's physically, whether it's emotionally, whether it's spiritually, whether it's you know kahin se bhi hum kahin na kahin se flaws mein wrap हुए hain. We are not flawless. ना हमारा physique flawless है, ना हमारे relationship flawless है, ना हम खुद flawless हैं. We are just on the journey to become flawless, but we are not. Even God, भगवान भी flawless नहीं होते यार, तो हम तो इंसान हैं. But भगवान accepted himself. Goddesses accepted themselves. Then why we human are not accepting ourselves? We always are like, you know, मैं मोटी हूं तो मैं मोटी क्यों हूं, कोई पतला है तो मैं पतली क्यों हूं, मैं स्किनी हूं तो मैं स्किनी क्यों हूं, मैं गोरी हूं तो मैं डस्टी क्यों नहीं हूं, मैं डस्टी हूं तो मैं ब्लैकिश क्यों नहीं हूं, मैं ब्लैकिश हूं तो मैं डस्टी क्यों नहीं हूं, मैं डस्टी हूं तो मैं गोरी क्यों नहीं हूं. There's a lot of things. It's a physical thing I'm talking about. Let's talk also about emotionally. You know, when you see yourself in the mirror, you don't accept yourself because of the boyfriend you have, जिसने तुम्हें धोखा दे दिया 5-6 बार maybe, and still you are going back to him. This is not that's the reason कि आप अपने आप को accept नहीं कर रहे हैं. Or maybe you don't get good marks in you know, English or history or civics or maths or accounts or physics or chemistry or biology or I don't know, entrepreneurship, anything. You don't accept yourself. You just cry in front of the mirror. Oh my God, I don't get the good marks. Oh my God, this is rubbish. You know, you do that stuff. You do that stuff. Why? Just a question. Why? Why you do that? Do you think we all are living a life where there is no flaw, जिसमें कोई कमी नहीं है? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम ऐसा जिंदगी जी रहे हैं? No. I am a person who like a lot of self-talk. You know, and I cry in front of the mirror. I feel so much pain. I just, you know, gather myself, because when I look into the mirror, I see, oh my God, this is not how I wanted me to be. This is not how I wanted me to be. So I have to get the shit done. I gather my emotional stuff. I you know, just raise from the ground and look in front of the mirror and say, I accept myself. And I do a little eye gazing exercise at that point, which is, I love you. This is I do every single day when I'm brushing my teeth. When I'm brushing my teeth, I'm in front of the mirror and I have written with the lipstick on the mirror. It's an eye gazing exercise. I have taken from some book. I don't remember the name. Let's put it anonymous. So I love you, and then I brush my teeth and I just keep saying to myself, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Sometimes some people, you know, may find this weird. Some people get too excited, some people start crying, some people like numb. But you have to keep saying it again and again, again and again, again and again, and then again, because till the time you don't accept yourself, like saying in the mirror and saying, I really love you with your whole heart, whole mentally, emotionally, physically, you just say it to yourself that I love you. That's the point you start loving to yourself. Because हम दूसरों को तो कैसे बोल देते हैं, I love you, you know, you're my whole life. The moment you came to my life became magical. Why? Your life was not magical before. Why? Your life can become more rubbish when he or she comes in your life if you don't love yourself. That's a red alert. And that's what I'm teaching you over here. Right? So try
actually not try, but make sure to accept yourself by doing this little eye gazing exercise every single morning, right? So this will help you to change your life, transform your life for the better. I bet you do this now. Okay, let's move forward. Self-care. Now, a lot of people are like more caring towards another person when they are physically unwell. They just go buy them flowers, give them chocolates, and self-care is more like अगर खाना खाया क्या, नहीं खा लो ना, आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी. You do this kind of stuff with your life partner, or to your boyfriend or girlfriend or husband or wife or whatever you say. You do this kind of stuff, right? So a lot of people do. Very few people, like 10% हमारे जैसे लोग नहीं करते, but हाँ, a lot of people, you guys do it. So what self-care exactly is? When you can take care of another person, why you cannot take care of yourself? When you have the courage, when you have so much love inside you कि आप किसी और को दे सकते हैं, तो थोड़ा खुद पे भी न्यौछावर करके देख लो. क्या पता सामने वाला आपको बरसात कर दे प्यार की आपके ऊपर. You never know, right? So what happens exactly is, अभी सेल्फ केयर में क्या करना पड़ता है. सेल्फ केयर के बहुत सारे तरीके हैं. हम बहुत सारी चीजें करके सेल्फ केयर अपने आप को बता सकते हैं कि okay, this is how I love myself. But let's not go on the track of buying yourself stuff or something in this self-care, but let's do simple thing, which is saying no to the garbage. Now, what is garbage? Garbage are the people who are not serving you, are the beliefs which are not serving you, are the thoughts which are not serving you, are the habits which is not serving you, are the food which is not serving you, is the surroundings which is not serving you. So it's you and outside you. You have to say no to that. For example, let's take a belief system example. I love talking about this. Now you have a belief that you are not you cannot be successful because you are not good in studies. Okay, you are not good in studies and you cannot be successful because of this. You have this belief system, right? So you have to change this belief system for the better. Our life is nothing more except in beliefs in which we all are working on. हम अपने आप को जो story बार बार बोलते जा रहे हैं, we have to stop saying that story and change the story, because the old story is not serving you. You are always like, just like this, watching this. Oh my God, my life is a piece of crap. Nothing is good is happening. Oh my God, I don't know what to do with my life. This sucks. And you just cry and cry and cry. You got to stop doing that, and you got to just get up and make a new belief system. I'm enough. I can do anything. I am successful already. This is the powerful thing. I can change my beliefs and I can change my life. You got to embed new belief systems in your head. Same way the habits. For example, you have a habit of waking up late, like 10 o'clock, 11 o'clock or 12 o'clock, and sleeping late. For example, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock maybe. So you got to change your timings, because you are not working towards your career. You are destroying your career because you are not sleeping properly, right? So do invest in these kind of things by saying no to the things which is not serving you. In the same way, the people are there. You are getting called for the chal movie देखने चलते हैं. You are getting called चल cafe चलते हैं. You are getting called कि चल pub में चलते हैं, चल दारू पीते हैं, चल हुक्का पीते हैं, चल cigarette पीते हैं, कुछ भी. There are so many things out there, यार. So you got to say no to the stuff which is not serving you. Simple. So that's how you take care of yourself. Because let's just imagine you have a baby, you have a child. So आप उसको क्या क्या करने दोगे, क्या क्या नहीं करने दोगे. Just invest in yourself. Because दूसरे को उंगली करके बोलना तो बड़ा आसान होता है, but खुद पे अप्लाई करना बहुत मुश्किल. And when
you just एक पॉइंट आएगा लाइफ में जब लोग खुद इंस्पायर हो जाएंगे आपसे, आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि ऐसे करना चाहिए. They just do it by themselves, just by seeing you, because you are radiating the energy of love and energy of mastery or energy of self-care, so people will get inspired by you. लेकिन खुद ही आप कचरे में पल रहे हो तो आप दूसरों को क्या बोलोगे? You are not able to say to kids, because recently मेरे पास एक केस आया था जिसमें उसके बच्चे ने उसके फादर को सीधा मुंह पे बोला था, पहले खुद तो करके आ जाओ फिर मुझे बोलना. So that's what kids do. Kids are, we are not living in 90s generation, 1998 generation where kids are like जी जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं. Kids do what they look up to. So change yourself if you want to change your kid's life, or if you want to change your partner's life, or if you want to inspire others, or even if just you want to be successful and be happy and live a fulfilling, healthy, happy life. Simple, right? So moving forward is self-respect. Now in the self-love challenge, this self-respect plays a very important role, very important role. Now we are the people, just say for example, the main reason you are not able to put keep the promises, you have a, I'm guessing you have a problem of not keeping promises, because to your partner or to any other person on this planet, you're not able to keep the promises because you are not keeping the promises to yourself first. For example, you promise your partner that I will take you to this place, or I will give you so much love when we get married, or I will take care of your health, I promise you that, I will take care of your family, I promise you that. But this all starts fading away. Why? A big why? Because you don't you don't keep promises to yourself. Simple. Respecting, the self-respecting, from where it comes, when you do the stuff which you don't like and still you do it because it's good for you, right? You do the stuff which is right for you, not the stuff you like or dislike. That emotional drama is no more there. It's just good, it just feels right, and you do it. I don't like technical stuff, and I don't like putting the camera on. I don't like this garmi which I'm getting right now. I don't like in the one position I'm standing, my legs are paining so much. I don't like that. But I do know what is right for me. I know that this is right, and sharing with you is right, and my mission is right, and it's all worth it. So I'm doing it. I'm gaining a massive amount of self-respect in myself after shooting this video for so many minutes. I will say I will gain a self-respect that yes baby, I did it. No matter it was so painful, my legs are hurting so much, still I'm on self-respect and my legs are paining so much, and still the self-respect you gain by doing the hard stuff, by doing what is right for you, right? So keep the promises to yourself, whether it's about the waking up early, or whether it's about eating right food, or loving yourself, or the goals you have. Just keep that promises, whether it's small promise or whether it's a big promise. Make sure to keep it. When you keep the promise, you gain immense amounts of self-respect inside you. And when you know your self-respect, you know what you are worth it. You don't allow the negative energy inside you then you make a boundary that this is what it is and this is what I'm worth for it, and I am not putting my foot down. That's the truth. You won't put your foot down because you know your worth. So gaining a self-respect is most important, because when you do the stuff, people see you doing it, and you respecting yourself is radiating an energy. And when other people criticize you or try to pull you down and hurt you, it don't affect you anymore because you respect yourself. You have made a boundary that shitty people will say the shit, hurt people will hurt more, and people who criticize will criticize more. It doesn't matter to you anymore, and it will lead to you a happy and fulfilling, extraordinary life. So for self-respect, do what is hard, right? Okay, now most important, self-healing. Now, why self-healing? Because when you are not healed inside, you won't be able to grow.
आप कहीं ना कहीं उस पहले की बातों को लेके ही आगे बढ़ोगे. If you will not be a healed person, so self healing is most important. Now what you can do in self healing is you can do the meditation to forgive yourself for the past things you have done wrong to yourself or to others. फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपने उस बॉयफ्रेंड को बचपन में धोखा दिया था तो उसके लिए फॉरगिव कर दो अपने आप को. तुमने कभी पैसे चोरी किए थे, उसके लिए फॉरगिव कर दो अपने आप को. अगर तुमको किसी ने हर्ट किया और तुमने फिर चिल्ला के रिस्पॉन्ड किया, मैच्योर नहीं बने, फॉरगिव कर दो अपने आप को. इफ यू आर द पर्सन जो बचपन में अपने आप को बहुत हार्श रहा कि ओ माय गॉड मैं पढ़ नहीं पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, फॉरगिव योरसेल्फ. इफ यू आर अ पर्सन जिसने किसी के बीच में लड़ाइयां कराई है, फॉरगिव योरसेल्फ. इफ यू आर द पर्सन किसी को बुली किया है, फॉरगिव योरसेल्फ. इफ यू आर द वन जिसने कभी गॉसिप करके किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रही है, फॉरगिव योरसेल्फ. Because when you will forgive yourself for the things you have done in the past, you will be becoming a person you never imagined, because forgiving yourself is most powerful way of healing yourself. There are a lot of different ways. There's chanting, there's different type of meditations, I agree. But for me, it's forgiving. Forgive yourself. Every minute you do something wrong, put in a meditation and you just forgive. Keep saying to yourself, I forgive myself, I forgive myself, I forgive myself, I forgive myself, I forgive myself. And you inbuilt that energy, and make sure you learn from that and you grow from that. Because healing is all about just coming out of it and growing from it and learning from it, but not doing the same mistakes again. Change the patterns you have by forgiving yourself so that you don't make the same mistake again. So that you can release the energy of dirt, heaviness in your brain, fogginess from your brain, and from the pain the guilt and the shame you're carrying in your heart from so long. Because it is all going physically also. When you experience any kind of emotion, it affects your physical life also. It affects your body. There's constipation coming up. There's arthritis. Fungus infection or pimples or throat infection or cancer or so many things, like बहुत सारी बीमारियां हैं. तो just make sure to forgive yourself and come out of that by healing yourself, because in the journey of loving yourself, self healing plays a very important role, right? So moving forward is self-worth. Now this one is my favorite, because I have this thing in my head कि भाई अपने brain पे invest करो. Just invest on your brain. Keep investing on your brain again and again and again. क्योंकि इतना कुछ है सीखने के लिए. It doesn't matter कि आप एक हाउसवाइफ हो, या it doesn't matter कि आप एक रिक्शा ड्राइवर हो, या फिर it doesn't matter आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कितने भी स्केल पे करते हो, या कितने बुढ़े हो, या कितने जवान हो, या कितने बच्चे हो, या कितने अडल्ट हो, या आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका ग्रुप कैसा है, आपके ग्रुप में सब हुक्का दारू टैंकर हैं, या फिर आप ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हो जहाँ पे बहुत सफिस्टिकेटेड लाइफ है, जहाँ पे सब कुछ बहुत डिफरेंट है. Doesn't matter. But when you invest in yourself, you will know your worth. The reason I have very few friends actually, बहुत कम लोग हैं मेरे पास दोस्त के नाम पे, because मुझे मेरी worth पता है. And ये एक कहा जाता है और ये बिल्कुल सही भी है, show me your friends and I will show you your future. ये बहुत सच्ची बात है, ऐसा होता है. आप मुझे अपने दोस्त दिखा दो, मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगी. Because the environment you live in decides your future, definitely decides your future. क्योंकि आप अगर अपने आप को worthy समझोगे ना, that you are worthy for this, you are worthy for this, तो ऑटोमेटिकली आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाओगे जहाँ पे आप कचरे को कम पसंद करोगे. जो भी है, आप अपने जैसे लोगों को ज्यादा पसंद करोगे, राइट? कि आप एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी, जैसे मुझे लाइक माइंडेड कम्युनिटी अच्छी लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली उदयपुर में थोड़े कम लोग ऐसे मिल पाते हैं. सो आई हैव माई ऑनलाइन ट्राइब फॉर दिस, कि हाँ मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मैं जहाँ से ग्रो होते जा रही हूँ. सो इन्वेस्टिंग ऑन योर ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें बेस्ट कर सकते हो,
by investing on yourself. And when you invest in yourself, you become a self-worthy. You upgrade a version कि भाई मैं ये करता हूँ लेकिन मैं इसमें सबसे बेस्ट हूँ. So you are self-worthy. राइट तो अगर आप होम कुक हो, तो आप अगर हाउस वाइफ हो, तो आप इतना अच्छा खाना बनाते हो कि यू बिकम वर्दी कि अच्छा खाना इसका नाम आ जाएगा. फॉर मी कि अगर टेक्निक्स के मामले में जाना है, बिहेवियर के मामले में, तो कशिश का नाम आ जाएगा. कोई जैसे यू नो कुछ भी, देयर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर. एक आई स्टिल रिमेम्बर देयर वर वी वर इन अ ट्राइब ऑफ रॉबिन शर्मा. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ रॉबिन शर्मा. ही इज अमेजिंग टीचर, मेंटोर. एंड उन्होंने एक वीडियो शेयर की थी हमारे साथ जिसमें एक बार वो एयरपोर्ट पे गए थे. एंड इट इज अमेजिंग वीडियो, बाय द वे, टच्ड माय हार्ट. एक वो एयरपोर्ट पे गए थे जहाँ पे वो वॉशरूम में गए थे, ठीक है. और जैसे ही उन्होंने वॉशरूम का गेट खोला, वहां पे जो क्लीन करता है ना, उसने बोला यू आर वेलकम टू माई शॉप, आई एम हियर टू सर्व यू, यू नो, समथिंग लाइक दिस. एंड the bathroom was so clean, the washroom was so clean. We saw the video, like इतना सा भी कुछ पे stain का कोई दाग नहीं होगा. So Robin Sharma made a video out of it, and you know उन्होंने उसमें बोला था कि कुछ लोगों को लगता है ये तो बड़ी अजीब चीज है, ये तो बड़े ऐसा कौन करता है, वॉशरूम को क्लीन करने से कौन इतना प्राइड फील करेगा, समथिंग लाइक दिस, यू नो. बट ही सेड द वन थिंग कि मैं जो करता हूँ मेरा यही काम है, I belong to this only. So why not to be the best out of it, you know? And this was so amazing. So because he invested in his brain, you know, उसने किया कि ये सारा मैं सैनिटाइजेशन करूँ, मैं अलग तरीके से रखूँ. उसने अपग्रेड किया अपने वर्जन को, तो वो लोगों को दिखने लगा. एंड ही बिकेम हिमसेल्फ वर्दी. उसने अपने आप को वर्दी माना, तभी तो वो बोल पाया कि यस, वेलकम टू दिस. एंड क्योंकि कुछ लोग शेमफुल होते हैं, हमारा तो यही काम है, ये है, वो है, बट ही सेड इट, राइट. एंड जब उसने किया तो इट्स सो प्राइड कि भाई वो लोग, मतलब ऐसा कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. इट्स अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस लाइक दैट, यू नो. सो सेल्फ वर्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई ट्रूली थिंक वन शुड बी इन्वेस्टिंग ऑन द ब्रेन इन एनी वे पॉसिबल. कुछ भी करके आप एक अच्छे से अच्छे पिता भी हो सकते हैं, अच्छे से अच्छी माँ भी हो सकते हैं, एक अच्छी वाइफ भी हो सकते हैं. बाय जस्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर ब्रेन, बी द बेस्ट. जस्ट व्हाट आई एम सेइंग इज जस्ट मेक श्योर टू बी द बेस्ट. प्ले स्मॉल रोल्स. सबका रोल प्ले मत करो, लेकिन जो रोल प्ले कर रहे हो उसको बेस्ट करो. फॉर मी पर्सनली, आई वांट टू बी अ बेस्ट वाइफ ऑन द प्लैनेट. I want to be the best mother on this planet, and I want to be the best daughter on this planet. I want to be the best healer, I will say, on this planet. So I'm just working on few, and I want to be the best out of it. Simple. I'm not so much like कि मेरे को best auntie बनना है, मेरे को best चाची बनना है. No, I'm just working on few of them. Like in the professional side also, कि मेरे को best entrepreneur बनना है और मेरे को best articles लिखने हैं. No, I just want to be a best healer. People will come automatically to me. Definitely, because when you know the worth of best, you know the worth of yourself. That's what it is, right? Moving forward, self growth. Now growth, self growth कैसे होगी? Of course, self worth तो आपको हो गया by investing on your brain. आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देंगे, फिर आप वर्दी बनते जाएंगे. आपको अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी. सेल्फ रिस्पेक्ट के बाद आप अपने आप पे इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो यू विल ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो. एंड नाउ सेल्फ ग्रोथ, राइट. अभी ग्रोथ कैसे होगी? सेल्फ ग्रोथ का सबसे बेस्ट फंडा है एक लाइन जो आपको हर एरिया ऑफ आपकी लाइफ में काम करेगी. इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ इट विल वर्क. And it is given by Marissa Peer, who have brought up a mission of I am enough. Now, what is I am enough? I am enough is like I am enough. If you want to do this, I am enough for doing this. I'm enough. I'm enough for making this done. I'm enough for dealing with my crisis. I'm enough for anything and everything I need in my life. And जब आप अपने आप को ये statement बोलना शुरू करेंगे, mentally you will start growing. I'm not like this baby works. Affirmation works, and this is the truth. आप जो words अपने दिमाग में डालेंगे, just in the same way it will come out. So that's the truth I'm talking about. Self growth का best तरीका, I am enough. So
That's what the self growth is all about, right? Now, self confidence, this is something which all people lack. Like most of the people text me with on my Instagram, on my LinkedIn, or through the mails, they say me this कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे पाया जाए. मतलब उनको लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बड़ा ऐसा चमत्कारी टोटका है जो भगवान ने ना बहुत कम लोगों को आशीर्वाद के तौर में दिया है, तथा तुम ही लोग सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकते हो. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं यूज करती हूँ सालों से अपने ऊपर, वो सिंपल है, इज बाय टेकिंग एक्शंस. ना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या? चलो लेट जस्ट से कि आपने एक 10,000 रुपए की साड़ी पहनी. इट्स ब्यूटीफुल साड़ी, यू नो, इट्स ब्यूटीफुल साड़ी. आपको ऐसा लगता है, आप कांच में अपने आप को देख के बोल रहे हैं वाह, it's such a beautiful साड़ी, it's such a beautiful साड़ी, you know. But आप शादी में गए, आपको किसी ने बोला कि बहुत अच्छी लग रही है. You're like हाँ 10,000 की अच्छी लग रही है ना. फिर आप दूसरे के पास गए उससे एक्सेप्टेंस लेने के लिए, तो दूसरे ने बोला ये क्या पहना, ये तो पुराना हो गया. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा. व्हाई? बिकॉज आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, बिकॉज यू डोंट लव योरसेल्फ. सो दैट्स हाउ वी कनेक्ट. सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्क्स इन लॉट ऑफ एरियाज ऑफ योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश नहीं आती है, कोई 4 लोग आपके सामने इंग्लिश बोल देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे हो जाएगा. आप ये नहीं हिंदी हमारी मातृभाषा ये नहीं सोचेंगे उस समय, या कुछ भी जो आपकी मातृभाषा मेवाड़ी बोलते हैं, या आपको भले 4 दूसरी भाषाएं आती होंगी जो उनको एक भी नहीं आती होगी, ठीक है, बट आपको वो याद नहीं आएगा उस समय. आपको कुछ याद आएगा तो पता है क्या, कि आपको इंग्लिश नहीं आती. दैट्स व्हाट यू विल रिमेंबर ओवर देयर, राइट. सो क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत सारे एरियाज में काम करता है, सो यू जस्ट नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ, वो तो होता ही है, एंड देन पुट अ एक्शन ऑन इट इफ यू रियली वांट टू वर्क ऑन इट. इट्स सिंपल. अगर आपको चाहिए वो चीज तो आप करो. जैसे मैं बताती हूँ, मेरे को हिंदी और मेरे को सिंधी नहीं आती बोलना, और मेरे को दूसरी भाषाएं भी नहीं आती बोलना. मेरे को सिर्फ इंग्लिश आती है अच्छे से बोलना, और हिंदी आती है थोड़ी बहुत. मतलब लिखने करने में नहीं आती हिंदी, ऑनेस्टली नहीं आती. बट मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे कभी नीचे नहीं जाता, क्योंकि ऐसा नहीं है लोग मुझे नीचा नहीं दिखाते हैं. अब सोचो, मुझे तो सिंधी के नाम पे भी लोग नीचा दिखाते हैं कि मुझे सिंधी नहीं आती, तो मुझे दे पुल मी डाउन. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ट्राई टू पुल मी डाउन. ओ तुम्हें सिंधी नहीं आती, अपनी भाषा नहीं आती, ऐसे करते हैं. नहीं आती यार, नहीं सिखाई किसी ने, क्या करे, नहीं आता. ठीक है ना, नहीं आता, नहीं आता, आई एम जस्ट नहीं आता, क्या करें, नहीं आता. बट इफ आई थिंक इन माई हेड कि यार ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है, या तो मैं इतनी स्ट्रांग हो जाऊं, हाँ नहीं आता है, नहीं आता, तुमको जो करना है कर लो, मेरे को तो अंग्रेजी ही आती है या मेरे को हिंदी ही आती है, ठीक है. मैं या तो मैं ऐसी हो जाऊं, या फिर मैं ऐसी हो जाऊं कि ओके, अगर मेरा कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है एंड आई रियली वांट टू ग्रो फ्रॉम माय हार्ट, अगर मेरे को दिल से उसमें ग्रो करने की इच्छा है, तो लेट्स लर्न इट, पुट एक्शन ऑन इट एंड जस्ट मेक श्योर इट्स डन. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे साथ इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में काफी ज्यादा होता है कि मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है, तो मैं टाइपिंग में काफी ज्यादा मिस्टेक्स करती हूँ, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करती हूँ मैं टाइपिंग में. सो शुरुआत में जब मैं इस जर्नी पे निकली थी, मिशन था मेरा कि मेरे को लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करनी है, मेरे को कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं लोगों को दे पाऊँ, मैं उनको कॉन्फिडेंट बना पाऊँ, उनको खुश कर पाऊँ, उनकी लाइफ में उनको स्टेबल कर पाऊँ. तो मैं कैप्शंस लिखती थी, मैं ईमेल लिखती थी, मैं सब कुछ करती थी, ठीक है, कमेंट्स करती थी. तो उसमें मेरी काफी ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती थी. तो शुरुआत में लोगों ने बोलना शुरू किया, तो आई स्टॉप्ड पुटिंग माय वर्ड्स आउट देयर. सोशल मीडिया पे मैं अपने वर्ड्स निकालना बंद कर दिया. बट सुनो लेटर आई अंडरस्टैंड, यार क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ऐसी हूँ, मेरे को तो अपने आप को एक्सेप्ट करना है. और मैं इतनी गंदी तरह से फिर मैदान में उतर गई कि मैं तो ऐसी हूँ. अच्छा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव. हाँ, कुछ सही करना है, ठीक है कर लूंगी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव. मैं उसको अपने अंदर शेक नहीं होने दे रही थी. नाउ यू नो कि अब मैं किस तरीके कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, बिकॉज आई जस्ट पुट इट माई फ्लॉ आउट देयर कि भाई मैं तो ऐसी हूँ. ईदर डू दिस और पुट एक्शंस एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ एंड लर्न इट एंड जस्ट be confident. Simple. There's no way other. It's just two-way thing. Either accept it or learn it. That's it. Right? Now, moving forward, now there's self-encouragement. Now, why we just beg for the compliments, you know? मैं अच्छी लग रही हूँ, ये कैसा बना है,
you know, things like that कि अच्छा लगा कि नहीं लगा. So there we human brain is begging, actually begging for the acceptance from others कि हाँ भाई बढ़िया है, हम encouragement का wait कर रहे हैं, हम praise के लिए beg कर रहे हैं actually. So like this, you know, give us the praise, we are waiting, right? So हम praise का beg कर रहे हैं, which is just not worth it, you know, because when we have the power to praise ourselves, to just make sure we are the best, we just tell our brain कि हम best हैं, हम best हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? Now a lot of people ask me this question कि कशिश इससे self obsessed तो नहीं हो जाएंगे? देखो self obsessed होने में क्या बुराई है? What is जब तक आप ऐसे नहीं हो कि ओह वो कौन है जिसने कशिश को मुड़ के नहीं देखा, जब तक आप इस तरीके का कुछ एक्टिंग नहीं करो तब तक सब गुड है, तब तक सब गुड है. ओके. देन इट गोज ऑन अ वेरी ईगोइस्टिक प्लेटफॉर्म कि आप एक ईगोइस्टिक पर्सन बन रहे हैं. बट knowing your worth and accepting yourself and encouraging yourself and praising yourself is never wrong in my eyes, because अगर हम अपने ब्रेन को ये कमांड करते रहेंगे ना, we are the best, we are the winner, we are the achiever, we become that. I have a list of I am 25, which is also the technique of a Robin Sharma, जिसमें मैं every morning लिखती हूँ कि 25 things which I am. And so I'm a winner, I'm an achiever, I'm a gold digger, I'm a giver, I'm a helper, I'm a pure soul, I'm the best wife, I am the best person on the planet, I'm the best daughter, and you know, I am productive, I am money magnet. I write this kind of stuff. I write it. Why? Because I want to command my brain that this is what I am worth for. And the best way to for self-encouragement is positive self-mirror talk. Now, why I do this? Because I have to train my brain that I'm the best. हमको negativity फटाफट पकड़ती है, हमें positivity बहुत कम पकड़ती है. एंड बिकॉज हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग चाहिए होती है, प्राइमिंग चाहिए होती है फॉर सक्सेस के लिए, तो हमें ये सब करना पड़ता है. वी हैव टू डू इट. सो दिस इज द वे टू डू इट. दिस इज हाउ यू डू इट. आई रिमेम्बर मैं मिरर के सामने काफी बकवास करती हूँ, ठीक है. सो आई वाज अ पर्सन, बहुत नेगेटिव टॉक करती थी मैं, बट आई स्टार्टेड डूइंग दिस. मैं वीक में कम से कम 2 बार ऐसा करती हूँ to train my subconscious brain कि भाई this is important, listen to this and give back this to my life. And this happened. क्योंकि अगर मैं अपने दिमाग में बेस्ट रहूंगी ना और कोई मुझे क्वेश्चन करेगा तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा. Take the feedbacks but don't take the criticism. Why I'm teaching you all this self. क्यों भाई? क्योंकि तुम्हें बाहर का कुछ एनर्जी अफेक्ट नहीं करे, तुम अपने आप में एक होल बन जाओ by loving yourself. If you apply all this baby, this like heart, you know, heart. Nice idea. अगर तुम ऐसे बन जाओ कि ये तुम सारी चीजें अप्लाई कर लो अपनी लाइफ में, there is nothing which can stop you from success. For loving yourself, it's just not about loving yourself, it's about the success. It's about achieving your goals, it's about your mission, your growth, anything you do in life, you will live an extraordinary life. I promise you that. I promise you that. Nothing can stop you. मुझसे लिखवा के ले लो, अंगूठा भी छपवा लेना, मेरा साइन चेंज होता रहता है. Okay, I'm just joking. Sorry, it was a bad joke. Shit. Anyway, moving forward, self-discipline. Now, the best way and self-discipline is the door for all the material success. I heard it somewhere. It's not mine. I heard it somewhere. Self-discipline gives you a lot of material success in your life. Like you just you know, तुम क्या करते हो self-discipline, जैसे कि जो तुमने आज काम किया वो तुम 4 दिन बाद नहीं करोगे. Why? For example, this happened with a lot of exercise, meditation, and going for the walk or yoga or healthy food. You know, a lot of these things which are day to day very important to you. Now, if you have this thing in your head कि भाई तुम्हें कुछ चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए तुम्हें ये 3 चीजें करनी पड़ेंगी. Anything, any goal you have, तुम्हें meditate करना ही पड़ेगा, तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी अपनी हेल्थ के लिए. एक्सरसाइज के नाम पे कुछ भी, डांस योगा, मेडिटेशन, डांस योगा, जिम, एनीथिंग यू लाइक, ओके, तुम्हें करना पड़ेगा, राइट. सो दैट्स अ सेल्फ डिसिप्लिन जो आप एक कमिटमेंट रखते हो अपने आप से, जो आप कंटिन्यूसली करते जाओगे.
It's not that आज करा 4 दिन छुट्टी, आज करा 4 दिन छुट्टी. It don't happen like that. You have to put a daily action on it every single day, right? Or maybe every single time. कुछ भी जो आपके goals हो उसके हिसाब से. Self discipline is the most important part. Is the most important part. And when you are not a person like who is self disciplined towards your goal, then your life is finished. For example, you have a goal. For example, I have a goal of कि मुझे 6 महीने में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे 6 महीने में बुक लिखनी है, ठीक है. माई गोल इज टू राइट अ बुक. सो मेरा सेल्फ डिसिप्लिन क्या होगा कि एवरी डे 30 minutes आई हैव टू पुट इन एक्शन टू अचीव दैट गोल. दैट्स माई सेल्फ डिसिप्लिन. ऐसा नहीं होगा कि वीक में एक बार लिखूं या 15 दिन में एक बार लिखूं या 1 महीने में एक बार लिखूं या 3 महीने में एक बार मुझे याद रहे, oh I have this goal and I have to achieve it. Then that's not the goal, ना. वो काम नहीं आएगा ना फिर. So self discipline is very important. When you are self disciplined, you gain self confidence, you are self worthy, you accept yourself, and you also become self aware of what you are doing. So look, everything is interconnected to each other. And that's how life is, right? Everything is interconnected to each other. You just need to pay attention. One thing will lead to another, but you have to start with one. That's why it's a 12 days challenge, right? Moving forward is self-control. Now self-control क्यों भाई? क्यों हम तो दुनिया को तो बड़ा अच्छे से कंट्रोल करते हैं. Do this, don't do that. ऐसा करो, ऐसा मत करो. उसको कॉल नहीं करने का है. आइसक्रीम नहीं खाने का है. सिगरेट नहीं पीने का है, जबकि खुद ही फूक रहे हैं पीछे जाके, क्या पता. तुम ही तो करते हो कुछ ना कुछ. जो तुम ज्ञान दूसरों को देते हो वो तुम अपने आप पे तो अप्लाई करते ही नहीं हो. सो लेट्स चेंज दिस फॉर अ वाइल. थोड़े टाइम के लिए ना थोड़ी सत्ता पलटते हैं अपन. लेट्स टर्न द टेबल नाउ. जो हम ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं ना, पहले हम अपने आप पे अप्लाई कर लेते हैं. विच इज सेल्फ कंट्रोल. ठीक है, कुछ भी चीज जो तुम्हें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट समथिंग, then just make sure to put it in action. And how you put in action, तो तुम्हें चाहिए, चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्फ कंट्रोल, तुम्हें वो नहीं तुम्हें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है. दैट्स योर गोल. ओके, सो अब तुम्हें अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो? तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? सो पुट this is called a delay gratification. I talk a lot about this. तो when you delay the gratification, जैसे कि अगर तुमने 7 दिन डाइट नहीं खाई तो you put a gratification, कि मतलब अवार्ड, कि अगर तुमने 7 दिन फास्ट फूड नहीं खाया तो तुम 8th डे पे फास्ट फूड खा लेना. That one day you eat your favorite food. That's it. Simple. Delay gratification. If you achieve this, you get this. And if you don't achieve it, you don't get it. Simple. अगर तुमने 7 दिन फास्ट फूड खा लिया तो 8वें दिन तो तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं. यू विल स्टिल बी इन गिल्ट, शेम, हेट्रेड. मैं कुछ कर नहीं पाया. दैट सेल्फ डिसिप्लिन इज गॉन, सेल्फ वर्थ इज गॉन, सेल्फ एक्सेप्टेंस तो चला ही गया, सेल्फ केयर तो दूर दूर तक है, राइट? तो सब कुछ चला गया जस्ट बाय मेकिंग अ मिस्टेक. सो सेल्फ कंट्रोल में हम एक टेक्निक लेते हैं विच इज कॉल्ड एज डिले ग्रेटिफिकेशन, जिसमें यू पुट अ गोल इन योर हेड कि आपको ये गोल अचीव करना है. एंड इफ यू अचीव दिस गोल you will do this. So कोई भी अवार्ड ले लो. फॉर मी इट्स लाइक अभी रिसेंटली मेरे को जैसे शूट करना था, जैसे मेरे ये वीकली टारगेट्स रहते हैं, तो मेरा जो वीकली टारगेट है, जैसे मेरा वीकली टारगेट है कि मुझे 1 महीने का शूट करना है और 1 महीने का कंटेंट लिखना है. दिस इज माई वीकली टारगेट फॉर दैट. अगर मैं ये वीकली टारगेट अचीव नहीं करती हूँ तो मुझे आइसक्रीम नहीं मिलेगा. अभी मैं 7 दिन आई एम ऑन डाइट फॉर द स्वीट्स, आइसक्रीम, कुकीज, चॉकलेट्स, एनीथिंग स्वीट. कुछ भी मीठा नहीं खा सकती मैं. एक प्रॉपर जो मीठा होता है मैं वो नहीं खा सकती. तो इट्स अ ग्रेटिफिकेशन यू डू. और क्योंकि मेरे ब्रेन में है कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा तो मैं ये ज्यादा काम अच्छे से कर पाती हूँ कि आई एम लाइक मोर फोकस. भाई ये तो करना ही करना है, बिकॉज नहीं तो मेरे को अवार्ड ही नहीं मिलेगा. एंड आई ट्रेन माई ब्रेन फॉर दिस. आप चाहो तो अपने से चीटिंग कर सकते हो, वही फिर आप ले देख के लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ यू हेट योर सेल्फ, you hate being in life, you're not worthy, you're not good enough. वही सारे ड्रामे वापस शुरू हो जाएंगे. But if you want to achieve something, you have to do something for it, and you have to take action with it for it. And to self control is one of the major aspect of this
जर्नी. बिकॉज सेल्फ कंट्रोल में क्या करेंगे हम, अगर जब अपना ग्रेटिफिकेशन डिले करेंगे तो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आप अपने अंदर पालोगे, बिकॉज यू आर कीपिंग द प्रॉमिस टू योर सेल्फ, राइट. सो दैट्स व्हाट यू डू इन सेल्फ कंट्रोल. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन. अभी इतना कुछ करेंगे तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए ना. ऑफ कोर्स मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा. अगर ये सब करोगे ना तो यू विल लाइक yes I achieved something in my life. तुम लोग ऐसे हो जाओगे, because I also like yes मैंने कर लिया finally, I'm like so happy, yeah ऐसा हो जाता है, you know. So you become like this, you know, you enjoy the things because you do all this, right. And ये पूरा journey के बाद you will come to the 12th one, which techniques is enjoying your own company, which will happen automatically. Like very few of the people out there who can enjoy your company. कभी अकेले बैठ के पिज्जा खाया है? पिज्जा अकेले? Yes, no. मुझे पता है नहीं खाया होगा. Because very few of the people can enjoy their own company. I enjoy my company so much. I bake pizza for myself. I eat by myself. और खुद में खुश हूँ. खुद में चलती रहती हूँ, खुद में खुश हूँ. किसी की जरूरत ही नहीं खुश रहने के लिए. हाँ, अगर आपका पार्टनर है तो आपको एक साथ में ग्रो करना है, दैट्स अ डिफरेंट केस. बट हाँ, आप अगर खुद में सेल्फ सेटिस्फाई हो पाओगे तो आप सामने वाले को भी सेटिस्फाई कर पाओगे इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली. यू नो, यू विल बी एबल टू डू इट. एंड व्हेन यू अचीव ऑल दिस, ये सारा अचीव कर लोगे तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन अपने आप हो जाएगा, बिकॉज यू विल स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी. एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर, बिकॉज वी आर ऑन दिस जर्नी ऑफ लविंग आवरसेल्फ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ, टू लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, फॉर मैरिंग योरसेल्फ. द सेल्फ जर्नी ऑफ द सेल्फ इज transformational one, and it's amazing because you grow through it, not go through it. So if you want me to answer any of your questions, please put your questions below. I will be answering on it. And if you want me to make a video on some stuff, just put the question below. For the next few months, after a few months, you will get the answer, you will get the video of it, or I will type it down or mail you with your answer, because I know you are asking me with some good reason and I'm here to help you. So thank you so much. I hope this journey help you, and I hope this journey transform you, because I know this will transform you only when you will be able to put it in action. So I request you to go and put actions on it. Share this, because you grow by growing others, and that's what we are here doing. You know, we are helping you, you help others, and that's how we grow. We make this world a better place to live. So let's do it together. Help me to help you. And thank you so much. Subscribe and share it anywhere you want with your loved ones, of course. Bye, take care.